everyone and welcome to the next exciting episode of my Vietnam series. In this video, we are heading to Hoi An after spending 3 amazing days in Ho Chi Minh City. Hey guys, welcome to Hoi An. Finally, हम पहुंच गए Hoi An and it's been only 5 minutes. We have reached to Hoi An and in our homestay. And I am already have fallen for the house and the place. Homestay है, owner stays in 5th floor and हमारा 3rd floor में है. So first, second, third, fourth is the rooms which are for hotel or rent जो भी है. So it's very nice. I'm gonna go inside and show you the room now. It's very beautiful. Right now I am standing in the balcony of this room. It's very cute, cheap and best. ऑनेस्टली बताऊँ आई डोंट नो कुछ मिलेगा कि नहीं बिकॉज इट्स सो क्वाइट. देखिए रोड्स खाली हैं एकदम. मैं लास्ट 10 मिनट से ग्रैब बुक कराने की कोशिश कर रही हूँ, बुक भी नहीं हो रहा है. एनीवे लेट्स गो एंड फिगर आउट हाउ इट इज़. इनिशियली वी थॉट कि हम लेंट्रन जाएंगे द बोट राइड बट वी गॉट लेट क्योंकि इतना थक गए थे, सो गए थे, थोड़ी बहुत रेस्ट कर रहे थे. बट लेट्स सी, अभी रात के 10 बज रहे हैं. हो ची मिन में तो 10 बजे से पार्टी शुरू होती है. अब लेट्स सी होयान में कैसा है. बट वेदर इज़ वेरी नाइस. गाइस रात के 11 बजे तक सारे मार्केट्स वगैरह सब कुछ क्लोज़ हो जाते हैं. अभी देखो सब कुछ क्लोज़ हो गए मेरे पीछे. हम थोड़ा लेट हो गए बट ठीक है, कल जल्दी निकल आएंगे. इट्स गुड, छोटी सिटी है. लोग जल्दी से खाना पीना खा के अपना शॉप को बंद करके सो जाते हैं एंड सुबह जल्दी उठते हैं. सो हमें उठना पड़ेगा जल्दी क्योंकि रात को कुछ करने के लिए है ही नहीं. सो ये बाकी मैं दिखाती हूँ आपको आगे. कुछ ही 1-2 शॉप से खुले हैं, ज़्यादा नहीं है. देखिए पीछे
हम अब इस साइड आ गए हैं। तो ये देखिए पीछे, इट्स क्रेजी गाइस, इट्स सो नाइस एंड रिवर पूरी खाली है। अगर किसी को शांति में बोट राइड करना है तो दिस इज़ द टाइम। अभी भी खुला हुआ है, रात के अभी 11 बजे और 11 बज रहे हैं। हाँ 11 बज रहे हैं, अभी भी खुला है। Thank you for watching guys. That's a wrap up for my first day in Hoi An. In the next video I will show you the places I have visited during my stay in Hoi An.